नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं ओमकार सिंह। आज इंडिया हैबिटेट सेंटर में एनुअल इंडस्ट्री पार्टनर्स मीट 2022 रोड अहेड सस्टेनेबल रेस्पॉन्सिबल एक दिन का सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में मुख्य रूप से मिस्टर अतुल तिवारी आईएएस सेक्रेटरी एमएसडीई एवं संजय बेनीवाल आईपीएस स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस, मिस्टर जीके बरधाना राय, वेदमणि तिवारी कू एंड एक्टिंग सीईओ। एनुअल इंडस्ट्री पार्टनर मीट में 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स ने भाग लिया। Mr. Badal was also telling me that in the hospitality sector, lot many apprentices are there in plumbing and carpentry, etc. But they are captured in their respective sector skill councils. Good news. And I like the way you're trying to sell the idea of apprentice. That is what is the basic intention. And businessmen like that, all of you are, you will understand the power of money rather than the appeal to the morality. So that's a good combination. Before me, Mr. Vedmani Tiwari would have been here, and he's no relation of mine. I hardly knew him before we met. So, it's important that we break this illusion, So he would have told you about the international worker and other things. I was telling my colleagues today when we were doing the review of one project, and after COVID and after the national education policy and under the current setup, visionary leadership of our Honorable Prime Minister, I was telling my colleague that this is for time for the skilling to take off. And we have made some mistakes in the past. Maybe we trusted the SSCs too much, some places. Maybe we need to bring them together and work with them in a more professional manner. Maybe we also want the SSCs to get out of the rut of making a lot of money through assessments, which is not fair. And Mr. Bahadur will stand up in protest saying, no, we gave 80% or 90%. We kept only very little amount. That apart, I'm talking about the whole sector skill council. So, sector skill councils as part of our whole skilling ecosystem are a very important part. And if you go back to the basic idea why the sector skill councils based on the UK model were created, was to have industry representation, industry voice, industry's requirement when we go out for the skilling at a large scale. So it's time that the way we are trying to reimagine Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, apprenticeship program, etc. It's time for the skill councils as well to reimagine themselves in a position where there is a blended learning, continuous assessment, and more value-loaded, entrepreneurship-linked kind of scaling requirements. And apprenticeship, of course, is one part of that. So without saying much, I can keep on going long, talking about this skilling thing, because as I spend time in this ministry, I'm getting more and more convinced that if we want to become as a great nation, then we have to fix up our education and skilling. And in fact, there is also a need that we increase the tourism inflow to our country. At present, it is quite less. And your contribution to that would be huge to our national GDP and increasing the livelihood. And in fact, the tourism and hospitality deserves far more respect than it does at now. Thank you for the invitation. There's so much to like and love about India and Indians. And I was very happy to hear from the government this morning that wheels are in motion for India to be able to host 100 million tourists
in the next few years, and for India to become a top destination that it truly deserves, because India has so much to offer. So I'll be looking forward to that. When it comes to HLEI, to tell you a little bit about my organization, this is the training and certification arm of the American Hotel and Lodging Association historically. HLEI has been lobbying and advocating for the industry for over 100 years. And HLEI was established in the 1950s to develop training programs and professional development programs for industry, as well as academic courses for academic institutions. And about 2,000 universities around the world use our programs today in about 100 countries. We have also been present in India for the past 20 years with our branch office in Mumbai with a dedicated team. And I would like to recognize our manager, Mr. Saurabh Malhotra, present here today. When it comes to our partnership with THSC, this is something we will cherish and we will be extremely proud of, because we share the same vision and mission as THSC, which is empowering and developing that next generation of tomorrow. And THST is doing an admirable work as well since 2014 in skilling and preaching hospitality as a career to all these students and professionals. So we are extremely grateful to the trust THSC is placing in our program, and the fact that we will be pairing our certification with the quality program that they have developed over the years, and looking forward to develop that next generation of hospitality in India. Thank you so much. सकारात्मक रूप देने में एक बहुत बड़ा योगदान किया है. Delhi Police will be eternally grateful for the kind of support given by your Sector Skill Council for cementing a very, very new scheme called as Yuva in Delhi Police. So, मैं बहुत आपका आभार, and I'm very grateful. And ease the tourists which are coming from outside Delhi or maybe abroad to settle down in case if they have certain issues. We already have these schemes, and as an organization, we are committed to it, and we would like to work closely with you so that we can make it more effective and better implemented on the ground, to be seen properly, to be disseminating information, and to help those who really need in the time as they come from outside. I'm very thankful to the CEO, Mr. Ranjan Bahadurji, for inviting me over and giving me this opportunity to express my gratefulness on behalf of my organization. I also would like to begin with congratulating the entire industry for bouncing back from the horrific 2 years of COVID that we have gone through. It was tough. It was tough for everyone, and more so for the poor. Why I say for the poor? Because those who were on the margins really went under. And that's where it hurts. Economic independence is first step for actual freedom. And why we started it? Almost about 20 years ago, we started recognizing the need. Special Commissioner of the Perception Management, and I am supposed to systematize all the community policing initiative and make this interaction so that it makes us a more people-friendly image rather than the kind of image I normally have as depicted in various movies. I'm the worst guy, I have no knowledge, I have no information, I can't act, I can't react. That's the kind of thing normally. I think if I call quote unquote thulla, who knows nothing, who can't do, but trust me, I'm a trained engineer, and we have a lot of engineers, we have a lot of doctors, we have a lot of PhDs. We are not really thullas, trust me. नमस्कार, मेरा नाम राजन बहादुर है। मैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल का CEO हूँ। आज हमारा जो ये इंडस्ट्री पार्टनर मीट हो रहा है, ये कोविड के बाद नेली 3 साल बाद हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी यहाँ अटेंडेंस है वो बहुत अच्छी है। हम करीबन 100 के ऊपर लोग हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। इंडस्ट्री पार्टनर्स से भी हमारे साथ यहाँ पे गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, हमारे रेगुलेटर्स हैं, और ये सिर्फ इस बात का एक सबूत है कि कितना एम्फेसिस दिया जा रहा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी पे।
कोविड के टाइम में आपको जानकारी ये ज़रूर होगी कि हमारा जो सेक्टर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वो परहैप्स सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था ये सेक्टर। सब कुछ बंद था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। पर अब जैसे जैसे कोविड खुल रहा है हम देख रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं रिवेंज टूरिज्म, लोग जा रहे हैं, घूमना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि एक जो लर्निंग है हमारी कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जो कल का नॉर्मल था वो आज बदल गया है। जो कल के क्वालिफिकेशन थे और जॉब रिक्वायरमेंट थी वो आज बदल गई हैं। आज की तारीख में कई चीज़ें मल्टीटास्किंग हो गई हैं। तो हम लोग भी इंडस्ट्री से मिलके अपनी सारी क्वालिफिकेशन दोबारा से बना रहे हैं। हमने 81 नई क्वालिफिकेशन बनाई हैं और मुझे कहने में बहुत खुशी है बिकॉज हमारे विचार में आगे चल के डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, अहमियत रखेगा। इसलिए हमने 19 नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म पे हैं। बिकॉज मुझे लगता है भारत एक ऐसे देश है जहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी है। बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं। तो बहुत कुछ ऑफर हम लोग कर सकते हैं और इसलिए एडवेंचर टूरिज्म हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, सॉफ्ट स्किलिंग हो गई जो अक्रॉस चलती है, उस पर हम लोग बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं। हम लोग आज की तारीख में करीब करीब 1000 ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं अक्रॉस इंडिया। सो कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट नहीं है। और इसमें हम लोग बच्चों को कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले 5 से 7 साल में करीबन 14 लाख बच्चों को ट्रेन किया है। और उस ट्रेन ही नहीं, उसके साथ हम एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पे उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है। और जब उनको सर्टिफिकेशन हो जाता है उसके बाद हम जॉब मेलास करते हैं जिसमें हम ये बच्चों को हम जॉब भी दिलाते हैं। तो मेरे हिसाब से आगे चल के ये सेक्टर बहुत उभरेगा, बहुत बढ़ेगा, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सरकार ने बहुत कुछ किया है पर मेरी ये दरख्वास्त है इंडस्ट्री से कि अब वो हाथ जोड़े हमारे साथ, सरकार के साथ, ताकि इसको एक दूसरे लेवल पे लेके जाएं और बच्चों का हुनर बढ़ाएं, जिसकी वजह से हम लोग ये स्किल गैप जो बढ़ता जा रहा है इसको हम नैरो करें। थैंक यू। मैं ज्योति मयाल हूँ, मैं एचएसस की चेयरपर्सन हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा कि स्किलिंग की क्या महत्व है। आज स्किलिंग की बहुत ज़्यादा महत्वता है और क्योंकि ये कोविड के बाद ये इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई है, पूरी नई बन गई है। हमको इसमें नए प्रोटोकॉल्स देखने हैं, हमें नए तरीके देखने हैं कि हम एक आदमी जो या एक ट्रैवलर जो आता है उसको क्या एक्सपीरियंस मिलता है और किस तरीके से वो अपना जो छुट्टी मनाता है या बिजनेस पे आता है उसको कैसे आगे लेके जाता है और एक्सपीरियंशियल लेके जाता है। बिकॉज आज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हेल्थ को देखे, बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको बीमार ना पड़े, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो बिजनेस भी करे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो हम स्किलिंग करते हैं बच्चों की और जो स्किल कर रहे हैं और फिर से रीस्किल कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को और यूथ को और हमारे जो भी आ रहे हैं स्किलिंग के लिए, आई थिंक एचएसएस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि हम उनको स्किल कर रहे हैं विद द राइट फॉर्मेट एंड राइट तरीके से कि वो ये इंडस्ट्री को आगे ले जा सके और ये एक चेन वैल्यू बने कि जिसमें नए यूथ जो हमारा इतना बड़ी कंट्री है, ना कि सिर्फ हम इंडिया के लिए ट्रेन करना चाह रहे हैं, टीएचएससी अब इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेन कर रहा है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण और गर्व की बात है। चेयरमैन को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही कमाल का प्रोग्राम है जहाँ पे टीएचएससी उसके पार्टनर्स ने दिखाया है कि कितना ज़बरदस्त ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट हो रहा है लोगों का। जो इंडस्ट्री इंगेजमेंट की है टीएचएससी ने अलग अलग कंपनीज के साथ लोगों को स्किल करने के लिए पर्यटन में ये बहुत बड़ा योगदान है भारत के लिए। पर्यटन भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है अगले 100 सालों के लिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है अच्छे लोग, ज़्यादा लोग और अच्छी तरह ट्रेन लोग। और जो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग ट्रेनिंग पार्टनर्स जो इंडस्ट्री इंगेजमेंट के प्रोग्राम के तहत करे हैं, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त प्रोग्राम मैनेजमेंट करी है और लोगों को ट्रेन किया है। बहुत बहुत बधाई। विशेष खबर सिर्फ खबर अब तक लाइव पर। कृपया टूरिज्म एंड इंडस्ट्री करिए सब्सक्राइब।